So we have already seen SN2 mechanism, how SN2 mechanism takes place within a slow step, a single step takes place. Okay, so within a single step, there is a removal of and a formation of. Okay, the bond takes place. Okay, removal of the halogen atom or halide atom and addition of nucleophile atom. Okay, दोनों भी एक ही स्टेप में होते. Okay, that is what SN2 mechanism we have seen. Why SN2? Because this 2 stands for the rate of reaction which will depend on both the reactants. Okay, so now we'll see what is SN1 mechanism. Okay, what is SN1 mechanism and what happens in SN1 mechanism when we call the SN1 mechanism will take place. Okay, now we'll focus over this. So in the reaction between suppose third butyl bromide. Okay, so let us see the reaction between, okay, third butyl bromide. The reaction between third butyl bromide and hydroxide ion and hydroxide ion. So reaction between third butyl. So you see this is CBr. This is CH3, CH3, and this is a CH3, tert butyl. This is what tert butyl. Okay, tert butyl bromide, tert butyl. Okay, bromide. Okay, when it will react with this OH minus hydroxide ion. Yes, which will give third butyl alcohol. Okay, third butyl alcohol. अभी देखो इसमें भी क्या हो रहा है, अल्कोहल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो रहा है इस कार्बन के साथ. ओके, सेम एज दैट ऑफ. ओके, सो ये देखो यहाँ पे OH अटैच्ड हो रहा है और प्लस ब्रोमाइड हलाइड आयन फॉर्म हो रहा है यहाँ पे Br माइनस. ओके, सो द रिएक्शन इन विच, okay, so it is the reaction in which a third butyl bromide reacts with the hydroxide ion. It will give rise to a third butyl formation of third butyl alcohol. Okay, this formation of third butyl अल्कोहल, थर्ड ब्यूटिल अल्कोहल. ओके, तो यहाँ पे देखो थर्ड ब्यूटिल अल्कोहल. सो देयर इज अ रिमूवल ऑफ डिटैचमेंट ऑफ दिस ब्रोमाइड, removal of and attachment of this OH minus ions here at this site. Okay, so in this way, this is a first order kinetics. Okay, it follows, it follows the first order kinetics. Okay, it follows first order kinetics. What is that first order kinetics? We'll see. Okay, it follows first order kinetics means the rate of reaction it depends upon only one reactant. दोनों भी reactant के ऊपर dependent नहीं है, किसी एक के ऊपर dependent है. Okay, so that the rate of this reaction depends on concentration of only one species. Okay, just now as I said, so rate of this reaction, okay, in such reaction, rate of reaction depends on only one species, only one species depends on only one species. एक ही species के ऊपर dependent है and that's why it is called as a first order kinetics. In earlier SN2 mechanism we have seen why it is called as SN2 mechanism. The reason being its rate of reaction depends upon both the reactants, इसलिए उसको SN2 mechanism बोला जाता है. और इसको SN1 इसलिए बोला जाता है because it follows only first order kinetics in which the rate of this reaction rate, okay, the rate of this reaction which depends, okay, which depends only on one species and which is the substrate molecule that is called as a third butyl chloride, third butyl bromide. Okay, and here the rate will be given as, okay, rate is equals to rate constant and this is CH3. Okay, CH3 कितने बार है, 3 बार है यहाँ पे. Okay, and CBr. Okay, आप देखो यहाँ पे right now the rate of reaction which is depends on only one substrate. Okay, which is depends on a substrate molecule. Okay, this is a substrate molecule which depends upon substrate molecule. Substrate molecule के ऊपर ही
ये डिपेंडेंट है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके, विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन OH माइनस ऑल्सो, ओके, OH माइनस के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है यहाँ पे, ओके, so that's why the rate of this reaction which depends only on one species, okay, and which is written as rate is equals to rate constant CH3 3 times A, okay, CBr, okay, that is tert butyl bromide, okay. So in this way, this is called as a substitution nucleophilic unimolecular. Okay, SN1 means what? A substitution. Okay, this is called as a substitution unimolecular. Substitution nucleophilic unimolecular. Nucleophilic substitution है ये वाला. Nucleophilic substitution, but it is unimolecular, एक ही molecular है, that's why SN1. Understand? So such substitution nucleophilic unimolecular, which is referred as SN1 mechanism, okay, that we are going to see right now in detail, how what happens in SN1 mechanism. So it can be seen in this reaction that the concentration, okay, of only substrate appears in a rate equation, okay, concentration of substrate molecule, that is taken over here, okay. So in this equation में आप देख सकते हो, okay, concentration of this only is taken, okay. So that's why rate is purely depends upon a concentration of substrate molecule only in this, okay, in SN1 mechanism, in substitution nucleophilic unimolecular mechanism, the concentration or the rate is depends upon a concentration of substrate molecule. रेट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ओनली इसके ऊपर डिपेंडेंट है, डज नॉट डिपेंड अपॉन दिस OH माइनस, OH माइनस के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है, ओके. So concentration of the nucleophile does not influence. What is OH minus here? It is nothing but a nucleophile जो attached हो रहा है यहाँ पे, nucleophile है ना OH minus, बराबर है, which is what? A nucleophile. And that's why rate is does not depends upon a nucleophile, okay, does not influence. So a concentration of nucleophile does not influence the reaction rate, okay. So concentration of nucleophile does not influence rate of reaction. What is that? Concentration of nucleophile. Nu means what here? Nucleophile. कौन है nucleophile यहाँ पे? This OH minus is a nucleophile. Okay, उसका concentration है ही नहीं इसमें, तो it will not influence the rate of reaction. Okay, so that's why in other words, the tert butyl bromide reacts with hydroxide by a two-step mechanism. Okay, so yes, two-step mechanism will be there right now. Okay, as per, okay, two-step mechanisms. Okay, so in very first step that will be called as a slow step. पहली step को क्या बोलेंगे हम लोग? Slow step बोलेंगे. What is happening in a slow step? Okay, so in a slow step, CX bond in the substrate undergoes heterolysis. हमने ऑलरेडी ये देखा हुआ है, क्या हो रहा है? CX bond ये क्या होगा? It undergo, हमने बोला हुआ है ऑलरेडी, this will undergo heterolysis. Heterolysis of this bond will take place. Already we have seen these two steps. इसमें क्या होता है कि CX bond break होता है and undergo heterolysis, means that there is breaking of the bond. Okay, and it will form X minus ions. Okay, so reacts with hydroxide, and yes, two step. In first step, that is a CX bond in a substrate undergoes heterolysis, and subsequent the second will be a fast step. Okay, second will be a fast step, and in fast step a nucleophile uses its electron pair to form a new bond. Okay, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे? C and Nu. Nucleophile and form a formation of the bond will take place. अभी ये formation of bond कैसे होती है? हमने देखा हुआ है ऑलरेडी. क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? यूज करता है. क्या करता है? इसके दो इलेक्ट्रॉन्स यूज करता है, बराबर है ना. न्यूक्लियोफाइल which will be attached, ये न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे? OH माइनस. तो न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड कर रहा है, ओके, कार्बन के साथ, हाउ इट फॉर्म्स अ बॉन्ड? इट यूजेस इट्स ओन 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस कोवैलेंट बॉन्ड. ओके,
while undergoing hydrolysis X forms X minus, क्या फॉर्म करता है X minus ion, आप देख सकते हो Br minus ion फॉर्म कर रहा है, means what, it is carrying out a complete pair of electron along with it. This is a living group. Okay, so what is these two steps we will understand through a diagram. Okay, diagram से देखेंगे. Okay, so Asselmann mechanism we will represent it on a structure. Okay, now let us see with the help of the structure how it is happening. Okay, इसको मिटा देते हैं. So let us see how these two steps, one is a slow step, okay, and another one is a fast step. How the slow and fast step is carrying out over here. Okay, so we'll focus over that. So very first step, the structure is, yes, very first step one, step first. Okay, step one. So CH3 3 times CBr. Okay, this is attached right now like this. Okay, so the very first step is the slow step and it is a reversible also. First step is a slow step, that's why, which is shown in a reversible symbol. Okay, slow step hai. Okay, so Asselmann mechanism which is represented over here, this is the very first step. Okay, so अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, carbon, okay, carbon which will be having a partial positive charge over here right now, and this is a bond here actually, a CH3, check this, and this is a CH3, CH3, okay, CH3, and this is a CH3 right now. Okay, carbon के साथ, and yes, plus Br minus. Okay, आप देख सकते हो यहाँ पे. नाउ कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए आ गया क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन वो लेके चला गया Br माइनस. ओके, सो दैट्स व्हाई this is the very first step, and this step will be called as a slow step. Why? Because this is a reversible will be possible है इसका. Okay, so in this way this third butyl bromide, in very first step there will be detachment of Br minus. ये देखो Br minus remove हो गया यहाँ से. Okay, so this is the very first step. Okay, that is called as a carbocation intermediate. Okay, that is called as a carbocation intermediate. इसको बोला जाता है carbocation actually carbocation. Okay, carbocation intermediate, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट. अभी देखो इसमें कार्बन के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है. क्यों पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि Br ब्रोमीन, ओके, ब्रोमाइड ने क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन वो चला गया लेके. दैट्स व्हाई कार्बोकैटायन, कार्बन के ऊपर क्या चार्ज है, कैटायन चार्ज है. ओके, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट. नाउ व्हाट विल हैपन इन अ सेकंड स्टेप. ओके, लेट अस सी इन अ स्टेप 2. स्टेप 2 में क्या हो रहा है, सो दैट this carbon CH3 which is having positive charge, और ये देखो यहाँ पे एक CH3 अटैच्ड है और दूसरा ये देखो यहाँ पे ऐसे अटैच्ड है. ओके, which फार्मूला ये वाला CH3. नाउ ये एक इसका इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, बराबर है. नाउ here OH nucleophile will attach, or nucleophile will attach in the second step, and this is a fast step. Okay, and in this way it will form a CH3C COH. What is the functional group right now? OH functional group. Okay, tert butyl alcohol यहाँ पे form हो गया. Okay, so this is two steps. Okay, this is a two-step reaction or two-step mechanism. SN1 mechanism is a two-step mechanism which will consist of a slow as well as a fast step. In a slow step, the detachment of the halogen atom, and in a second step, the formation of or addition of a nucleophile, okay, will takes place. और ये देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ये बैलेंस हो जाएगा. ओके, एंड इन दिस वे CH3
3 times okay, CH3 3 times COH, that is the third butyl alcohol will be formed. Okay, so this is a SN1 mechanism. This is what this complete will represent SN1 mechanism. Okay, this represent will SN mechanism. Okay, in a slow and in a fast, that is a two step. This step is a fast, this step is a slow. So now we'll see what are the salient features of this SN1 mechanism. Okay, we'll focus on what are the salient features of this SN1 mechanism. वो देखेंगे अभी हम लोग. Salient features of SN1 mechanism, which will takes place in two steps. Okay, so third butyl bromide is the example. When this third butyl bromide, when it reacts with OH minus, it forms a third butyl alcohol. Okay, addition of nucleophile will takes place. Okay, so salient features of SN1 mechanism. Okay, SN1 mechanism. So, a salient features of SN1 mechanism. So, the two steps mechanism. Very first is what? It is a two step. It is two step mechanism. ये याद रखना है सब लोगों को. Okay, don't get reverse. को reverse मत कर दो. SN1 and SN2 को reverse नहीं करना है. Okay, how you have to remember SN1 mechanism, which will be a first order kinetics. Rate of reaction which will be depends upon only one species. ऐसे याद रखो. Then you will remember. SN2 rate of reaction will be depends upon the both two species. Okay. So that's why it is a two-step mechanism. Next one is the heterolysis of CX bond in a slow. Okay. So second is what? Heterolysis. Okay. Heterolysis कौन से step में हो रहा है? Heterolysis of CX bond. Heterolysis of CX bond that will be takes place in a slow step. बराबर है, स्लो स्टेप में होगा हेट्रोलिसिस ऑफ ओके इन स्लो एंड रिवर्सिबल फर्स्ट स्टेप. ओके, स्लो स्टेप है और ये जो स्लो स्टेप है ये क्या है? दिस स्टेप इज अ रिवर्सिबल. दैट्स व्हाई वी हैव रिप्रेजेंटेड इट विद दिस सिंबल. आप देख सकते हो इसी सिंबल से हमने उसको रिप्रेजेंट किया है बिकॉज इट इज रिवर्सिबल. सो हेट्रोलिसिस ऑफ दिस CX bond that will take place and it is in a slow step. Okay, reversible है ये वाला. Okay, reversible first step to form a planar carbocation intermediate. Okay, क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ इसमें? Okay, it is forming a planar. आप चेक कर सकते हो. It is a planar carbocation intermediate. कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है. आप चेक कर सकते हो. ओके, विच इज हैविंग कार्बन के ऊपर क्या चार्ज है? प्लस चार्ज है. सो दिस इज द second feature. Okay, third, the attack of the nucleophile on carbocation intermediate in a fast second step to form the product. अभी क्या होता है इसमें? नेक्स्ट अटैक होता है, बराबर. देयर इज अटैक ऑफ nucleophile. What is the nucleophile in this third butyl bromide? OH minus is a nucleophile. Okay, on a carbocation on, और ये कहाँ पे होता है अटैक? दिस अटैक ऑन दिस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट. बराबर है. सो दिस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जो है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, उसके ऊपर अटैक होता है एंड इट गेट्स अटैच. ओके, एंड इन द फास्ट सेकंड स्टेप, किसमें? फास्ट सेकंड स्टेप में. एंड सेकंड स्टेप इज in second step. What is that second step? The second step is a fast step. Okay, already we have discussed. Okay, to form a product. Okay, to form product form होता है alcohol. Okay, third butyl alcohol. Then the fourth one is the when SN1 reaction is carried out at chiral carbon. Okay, अभी देखो यहाँ पे when it is taking place at this chiral carbon, okay, in an optically active substrate, the product formed is nearly racemic. Okay, so what is that racemic? Okay, what is that racemic? Okay, आप देखो इसमें product जो form हो रहा है यहाँ पे, product form is racemic mixture.
Okay, product which is formed is racemic. Okay, is nearly racemic. So what is racemic? We have already studied. Okay, so in racemic mixture, what happens? We have already studied that in case of racemic mixture, okay, the dextro-rotatory kind and the labio-rotatory kind. Okay, when there is a mixture of unimolar, okay, when there is a unimolar जब mix होता है, कौन सा डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लैबियो रोटेटरी क्या हो जाता है देयर इफेक्ट दे गेट कैंसल ओके सेम इज हैपनिंग ओवर हियर सो द प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है ओके सो इट इज रैसेमिक ओके नियरली रैसेमिक देखो यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या है इनिशियली सबस्ट्रेट दिस CH3 3CBr बराबर है एंड द प्रोडक्ट विच इज फॉर्मिंग और जो प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है CH3 3COH ओके आप चेक करो द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड इज अ रैसेमिक ओके जो प्रोडक्ट जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो क्या है रैसेमिक है ओके सो दैट्स व्हाई this indicates that SN1 reaction proceeds mainly with racemization. Okay, what is the conclusion from this? The SN1 जब mechanism होगा या फिर SN1 जब reaction होगा, so it will proceed with racemization. Racemization that is the इफेक्ट जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी काइन एंड लेबियो रोटेटरी काइन जो रोटेशन है ओके प्लेन पोलराइजेशन वो क्या हो रहा है दोनों भी रिवर्स दोनों भी क्या कर रहे हैं इफेक्ट जो है कैंसल आउट कर रहे हैं ओके सो दिस मींस बोथ द enantiomers ऑफ द प्रोडक्ट ओके रैसेमाइजेशन both enantiomers one is the dextrorotatory and another one is the labiorotatory so both the enantiomers of the product okay enantiomers of the product okay these are formed in almost equal amount both enantiomers of the product are formed in equal amount कौन सी अमाउंट में इक्वल अमाउंट में फॉर्म हो रहे ओके एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट टर्ट ब्यूटिल क्या था अल्कोहल बराबर टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल जो फॉर्म हो रहा है ये क्या हो रहा है दिस प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड इन इक्वल अमाउंट okay and that is the reason both enantiomers of the products which are formed in a equal amount और हमें पता है क्या रोटेशनल है वन इज अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड अनदर वन इज अ लैबियोरोटेटरी अगर दोनों भी अगर इक्वल यूनिमोलर अमाउंट में फॉर्म होते हैं दे विल कैंसल द इफेक्ट ओके क्योंकि रोटेशनल एक का पॉजिटिव होता है एक का निगेटिव होता है बट सेम मैग्नीट्यूड से होता है ओके so due to which what will happen these both enantiomers they will cancel their effect okay so the racemization will take place okay so SN1 reaction is result of formation of the planar carbocation intermediate okay so racemization in SN1 reaction is the result of formation of planar carbocation intermediate so nucleophile can attack planar carbocation from either side okay तो अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो here the nucleophile is what here OH minus ये इस साइड से भी ये कर सकता है ओके अटैक कर सकता है और वो उस साइड से भी अटैक कर सकता है ओके सो न्यूक्लियोफाइल व्हाट इज इंपॉर्टेंस इन दिस इज व्हाट द न्यूक्लियोफाइल व्हिच इज अटैकिंग nucleophile can attack planar carbocation from either side can attack this planar कार्बोकैटायन प्लेनर कार्बोकैटायन है और उसको किसी भी साइड से अटैक कर सकता है फ्रॉम आइदर साइड ओके फ्रॉम आइदर साइड ओके किसी भी साइड से ये अटैक कर सकता है ओके सो which result in formation of both the enantiomers of the product okay result in formation of both enantiomers
So have a look at this once again. Very first salient feature is related with the two-step mechanism will be there. Second will be what? Heterolysis will take place. Heterolysis of the CX bond. Okay, so this bond will get break and the slow step will take place and this will be a reversible. This may be reversible. A planar carbocation intermediate. What is that? Planar geometry planar carbocation intermediate है and the attack of जो nucleophile है. Okay, on a carbocation intermediate, okay, which will take place in the second step. हमने देखा वो step क्या है? Fast step है to form the product. And the next last silent feature is related with the product जो formed हो रहा है. Okay, which is a racemic. Now what is that racemic? We have already seen. Okay, so racemic in which it is having unimolar concentration of dextro and labiorotatory kind. डेक्स्ट्रो में पॉजिटिव होता है, दैट इज पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज होता है रोटेशन. लेवियो में एंटी क्लॉकवाइज होता है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड देखो सेम होता है. अभी देखो एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर है, दोनों भी क्या करेंगे? कैंसल आउट कर देंगे. एंड दैट्स व्हाई a racemization will be takes place and SN1 reaction which will proceed with the racemization. Okay, so in this way both the enantiomers of the product are formed in equal amount में form होते हैं ये वाले. Okay, dextrorotatory and labiorotatory. And nucleophile can attack planar carbocation. OH minus जो है वो किसके ऊपर अटैक करेगा? इस प्लेनर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जो फॉर्म हुआ है. ओके, किस साइड से अटैक कर सकता है? उसको लेफ्ट साइड से भी अटैक कर सकता है, राइट साइड से भी अटैक कर सकता है, फ्रॉम आइदर साइड. और उसी के कारण क्या होता है? इट फॉर्म्स बोथ इनैंटियोमर्स. क्योंकि ये समझ में आना चाहिए बोथ इनैंटियोमर्स कैसे फॉर्म होंगे, बिकॉज दिस न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक, जैसे हमने SN2 में देखा उसके अपोजिट डायरेक्शन से ही वो अटैक करता है. बट हियर इन दिस केस ऑफ SN1 मैकेनिज्म this nucleophile can attack from either side, that is from both the sides, and that is the reason both enantiomers will be formed. Okay, so it results into the formation of both enantiomers, one which is a dextrorotatory and one which is a labiorotatory. दोनों भी cancel out कर देते हैं. Okay, so this is these are the salient features of the SN1 mechanism. Okay, so in the next lecture, in the next video, we are going to see what are the factors that are influencing these two mechanisms. कौन से factors से, what are the various different factors that are influencing either SN1 mechanism or SN2 mechanisms. Okay.